So good afternoon students. In this particular video we are going to discuss about one more building service, that is we few building services के बारे में हम discuss करेंगे, like electrical service, telecommunication, rainwater harvesting. So there are different types of building services we can provide. ठीक है? So let's start. See, necessary building services play a very vital role in providing comfort to the user if environment is not suitable. See, I already told key what is the importance of building services, because it mainly gives the comfort to the the peoples. ठीक है? So users के लिए. So there are different types of services are there: electrical, air handling, heating, ventilation, lighting, plumbing services. There are so many different types of building services are there. I think in the previous videos we discussed about the sound, noise, acoustics के बारे में, and also we discussed about the ventilations. ठीक है? So let's see other different types of building services. So in this particular electrical service, so obviously it is a very essential one, सबको पता है, and provide power for operating various types of electrical appliances, providing artificial lighting, artificial ventilation, pumping water. So for all these things, that is pumping water के लिए या ventilation के लिए, lighting के लिए, सब के लिए electrical services are the most important one. ठीक है? So Indian Electricity Act 1910, Indian Electricity Rules 1957, and the Local Electricity Authority. So all these members are given some guidelines for the what we can say for the guidelines for the installations of the electrical services. So installation shall be carried out by a licensed electrical contractor. So that means whatever the installations you are going to do, it has to be done by the licensed electrical contractor for the safety purpose. And design and planning of the electrical wiring, most of the times, like design and whatever the planning of electrical wiring is there, it depends upon the what type of building you are going to construct, or what is the requirement of the consumer, because the different types of a building, whether it is educational building or it is a residential building or any other mercantile building, so all these different types of buildings will have the different requirements for the electrical wiring. Okay? So architect should consult an electrical engineer, obviously, while doing this design or planning. So he has to architect should consult the electrical engineer so that he can collect the different information, such as what type of supply you need for that particular building. Yeah, for if it is a residential, or for if this is a education building, what type of supply you should provide. All this information electrical engineer can give. Then what is the occupancy, proposed electrical load कितना आ सकता है, लोड कितना होगा, अर्थिंग अरेंजमेंट कैसा रहेगा, या डिपेंडिंग ऑन इवन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के लिए अलग अलग, वेदर इट इज़ अ स्नोई एरिया या हेवी रेनफॉल एरिया. So electrical engineer can give the better options or better idea regarding that particular problems or different conditions. So that's why architect का मेन काम है कि while design or planning he has to consult the electrical engineer. Okay? And also you can ask about the degree of mechanical and electrical protection necessary. So even mechanical या electrical protection भी necessary कैसे रहेगा वो भी बताएगा. And even you will tell what is the importance of continuity of electrical supply and possible need for standby. मतलब depending upon the occupancy or depending upon the type of building, even whether the electrical supply standby रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, या is there any other alternative methods, या is anything with related to the energy conservations, like any नया scientific way है ये एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं क्या, any different types क्या बोल सकते हैं सोर्स के बारे में, and what is the space requirements, then about the space requirements of accommodation of the substation. So that means if it is a very huge building, there will be some transformers, switch rooms, cables सब रहेगा, space substations रहेगा, उसके लिए क्या space लगता है. So all these things, distribution cables, all these informations will be given by the electrical engineer. Okay? So then and the one more important information is wherever you are going to provide the substation, it should be above the high flood level. Okay? So this is the safety purpose.
Then there is a term called as switch room in a large installations. That means if समझो very huge residential building है या education building है, there is a separate switch room is required, and उसके लिए उस particular location and that particular switch room should be located near the electrical load center के पास ही रहना चाहिए. इसलिए most of the time in education building आप देख सकते हो this electrical load center and the switch room both दोनों एक ही जगह पे या नेक्स्ट आजू बाजू में रहता है. ठीक है. एंड प्रॉपर डक्ट्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ बेंड्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द एंट्री ऑफ द मेन सप्लाई केबल टू मेन स्विच गेट. ठीक है. सो दिस इज वंस अगेन फॉर सेविंग के लिए. ठीक है. देन देर इज़ अ टर्म कॉल्ड एज एनर्जी मीटर्स. द मेन एनर्जी मीटर्स मीन्स आप देखा होगा जहाँ पे आप रीडिंग लिखते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आके मीटर रीड करके जाते. So उसका लोकेशन इट शुड बी एक्सेसिबल टू द ओनर ऑफ द बिल्डिंग एंड अथॉरिटी. सो दैट मीन्स जो भी ओनर है बिल्डिंग का, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग एंड सूटेबल हाइट पे रहना चाहिए ताकि द रीडिंग्स देख सके, एंड प्रोटेक्टेड विथ प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक ग्लास विंडोज. सो नाउअडेज यू कैन सी देर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ चुका है. बेटर सेफ्टी के लिए अलग अलग बॉक्सेस वो सब प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिकल लेआउट ऑफ वायरिंग इज ड्रॉन बाय द कंसिडरिंग प्रॉपर लोकेशन ऑफ ऑल द आउटलेट्स फॉर द लैम्प फैंस अप्लायंसेस. सो ऑब्वियसली आपका एक डायग्राम है जो इलेक्ट्रिकल लेआउट भी ड्रॉ करना पड़ता है एपीडीबी प्रैक्टिकल्स में. सो आपके 5 शीट में एक शीट में इलेक्ट्रिकल लेआउट है. सो इन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल लेआउट नहीं पहले था, आई थिंक नाउ दे आर रिमूव्ड, बट इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम इलेक्ट्रिकल लेआउट में कैसा था, they supposed to show the all the locations of the outlets, the lamp fan wiring कैसे रहेगा, अब सब प्रॉपर से दिखाना पड़ता था विथ सिम्बल्स. ठीक है. एंड पावर एंड हीटिंग सब सर्किट्स आर केप्ट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम लाइटिंग एंड फैन सब सर्किट. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इफ़ यू टेक ए रेसिडेंशियल और यू नॉर्मली बाई ड्राइंग द रेसिडेंशियल देर आर 5 एम्पेयर सर्किट एंड 15 एम्पेयर सर्किट आउटलेट्स रहता है. सो फॉर पावर एंड हीटिंग अप, रेफ्रिजरेशन, गीज़र, इसके लिए 15 एम्पेयर लगता है, एंड नॉर्मल लाइट फैंस के लिए 5 एम्पेयर सॉकेट लगता है. सो दैट मीन्स इसका दोनों का अलग अलग ये क्या बोलते हैं सब सर्किट्स बना के रखना पड़ता है, दोनों एक ही में कनेक्ट नहीं करने का. And electrical installation in a new building is generally commenced immediately on the completion of the main structure building work and before finishing work such as plastering. So that means you know that electrical installation का जो भी रहता है, जो मेन बिल्डिंग वो सब हो जाता, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बन जाता है. सो दे स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बट दे हैव टू फिनिश विद इन द फाइनल फिनिश वर्क, दैट इज़ प्लास्टरिंग होने से पहले वो सब करना चाहिए. ठीक है. इन द बिल्डिंग 15 एम्पेयर सॉकेट आउटलेट्स कौन सा रहता है, मैंने अभी जस्ट डिस्कस कर रहा था कि एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर्स, हीटर, रेफ्रिजरेटर्स, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर 15 एम्पेयर, एंड लाइटिंग, लाइट्स, फैंस, ये सब 5 एम्पेयर सॉकेट में आता है. शेड्यूल ऑफ सॉकेट्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग. सो दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ सॉकेट्स लगेगा, कितना नंबर स्विच बोर्ड रहेगा, कौन सा लोकेशन पे रहेगा. सी ऑल दिस थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड द जो भी क्लाइंट रहता है उसका रिक्वायरमेंट के ऊपर रहता है. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज़ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, द टेलीफोन कनेक्शंस, टेलीग्राफ, इंटर कम्युनिकेशन. सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. So it has to be planned well in advance so that suitable provisions are made in the building plan. So obviously you take any building service, the proper planning has to be done so that once the construction is done बाद में वो सब include करना it will be a very difficult and it becomes expensive. ठीक है. Wiring for telecommunication in small building is undertaken by the telephone department. So that means normally छोटे छोटे जो भी वायरिंग का रहता है, it will be for the normal small buildings के लिए it is taken by the telephone department on surfaces. Normally it is taken by the telephone department, and bigger installations it has to be used, you have to use the conduits. ठीक है. Requirements, ducts of the main cables from the public telephone, that is ducts for the main cables from the public telephone distribution system. So that means whenever you are going to provide the telecommunications wiring systems, all those things, what you have to do is जो main supply है उस उधर से through duct में आपको wiring लेके आना पड़ेगा for other distribution के लिए. Number of intake points will depend upon the design and internal arrangement of the building. So obviously intake points कितना रहना चाहिए depends upon the type of the occupancy. Whether residential है तो अलग है, कंपनीज़ के लिए अलग रहता है या एजुकेशन के लिए अलग रहता है.
So main distribution case for the connecting the cables with internal wiring system. So obviously it has to be, see, main distribution system, then there is internal sorry, what we can say, distribution system रहता है, ठीक है. So all these things are provided, well connected, proper रहना चाहिए and proper material use करना चाहिए. Vertical riser ducts throughout the height of the building. So obviously you need to use the vertical ducts for the entire height of the building, and also horizontal ducts so that you can take and go the wires to the destinations. So this is about the telecommunication services, ठीक है. And there is a air conditioning and air heating, which already discussed in some previous video में भी थोड़ा discuss किया था. So in, if you take a air conditioning and or air heating, there are different units will be there, like filters, heater, refrigeration units, humidifiers, air distribution system. So many things comes into picture. And air conditioning, or it installed at the central place. Conditioned air is supplied to various parts of the building through ducts. So if it is a centralized AC hai to obviously it is installed at the central place, and whatever the conditioned air is there, that will be supplied for different rooms or different parts of the building through the ducts, okay. And even I think in the last class even we studied about the different material which are going to use for the ducts. Aluminium का हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ऐसा अलग अलग you are going to use. Central air conditioning system can be used for central heating system by providing hot water or steam boilers, heating coils. So that is what I was telling. Even this is used for the even heating purpose also by providing the hot water and the steam boilers, ठीक है. So next one is the vertical circulation, that is lifts and escalators. You know the difference between the lift and the escalators, and lift is a vertical one, whereas escalators are inclined one. Both are used to transport whatever the materials or people from one place to another place, ठीक है. The lift appliance designed to transport person or material between two or more levels, two or more levels in vertical direction by means of guided car or platform. So this is about the lift, whereas escalator is the escalators are the power driven inclined continuous stairway used for rising or lowering the passengers. Inclination should not be more than 30 degree, otherwise it will become safety issues आ जाता है. And the speed of the escalator should be 45 centimeter per second, ठीक है. So arranged in pairs, one for obviously escalators, if you see any malls and all, there will be two escalators रहता है, one for upward direction, another for the downward direction, ठीक है. While designing a building, architect should consider the following points. So that means while designing the, whether it is a mall or buildings or any other buildings, type of the different types of the building, the architect should keep in mind some of the points, like what should be the number of the lifts you have to provide for that particular building, and what should be the size of that particular lift, or where exactly he has to provide, and what type of landing doors you have to provide, even how many floors that particular lift is going to serve, and what is the different height between the floor levels, and what should be the number of entrance for the whether it is a lifts or escalators. And also if it is a lift, then there should be a machine room, so where exactly that machine room has to be provided, and what about the ventilation and lighting for that machine room, and even for the lift. And there is the term called as lift depth of the lift pit, ठीक है. And even the electrical supply requirement for the lifts, backup, all this information has to be considered while designing. The architect should keep in mind while designing the lifts and or escalators, ठीक है. So then there is another one building services, that is rainwater harvesting, and you know this is very common topic, and most of the time you already studied so many times about this rainwater harvesting, ठीक है. So rainwater harvesting, what need of rainwater, need of water, it is a very basic slide. You know, for domestic use, that is drinking and cooking, agricultural purpose, industrial purpose, even sometimes for cleaning the roads, firefighting, so many other purposes the water is required. So see, what happens is, because of the industrialization, the population is shifting from rural to urban. So जैसे जैसे the peoples are coming entering into the
what we can call for the towns, cities and all, there is a requirement of water. So because of that one there is रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गया है, तो शॉर्टेज भी हो रहा है पानी का. सो दैट इज़ वाई व्हाट हैपन्स इज ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो पानी बहुत ज़्यादा वी आर यूटिलाइजिंग इट, दैट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. So in this shortage of water, obviously what we have to do is we need to utilize the rainwater. Okay, so that is what we'll call rainwater harvesting. See, Assam is getting 100 almost 1000 plus rainfall per rainfall per year, uh, but still there is an inadequacy of proper drinking water because of surface runoff. The water whatever it is coming, even though it is getting most matlab Chirapunji, all this area is getting heaviest rainfall, highest rainfall, but still there is a shortage of water because they are not storing the water, they are not utilizing that water. Whatever the water comes from the rain, it is just surface runoff. Okay, it is entering into the sea. So because of maximum boring all this thing, पानी जो हम utilize कर रहे हैं, there is a depletion in the groundwater level. So proper steps here has to be taken, otherwise in future already it is we are facing the problem of water in future, or we may go into the danger zone. Future of water is in the hands of the people, professionals, business sectors, governments. Obviously it is not the problem of only the government, even the industrialists, people, business sectors, even professional teachers, even every citizen should understand the importance of water, and they have to start saving the water and without wasting it. Okay. So changes in the atmospheric conditions, emission of chlorofluorocarbons, interference of man in the ecological activities is responsible for irregular and unbalanced rainfall. So you know what is the main reason of why there is a shortage of rainfall, or why the shortage of water is there. One of the solution is to store the rainwater, recharge and replenish the water bodies. So how we can overcome this shortage of water is the best way. One of the best ways, uh, whenever the rain comes, you save the water, yeah, store the water, recharge, and you can replenish the water bodies. That means you can once again bring the life into the water bodies. So once again there is another slide we can see here, need of rainwater harvesting. If you do the rainwater harvesting, basically what happens is the ground is acts as a natural filter. Continuous pumping water, concrete pavements, footpaths, parking area were responsible for less filtration. See, normally what happens is if you nowadays there is a road constructed, buildings are there, जो natural infiltration था वो नहीं हो रहा है, because of that one what we can say underground में पानी it is not recharging. ठीक है. Then also whatever it is there जो बहुत पहले से पानी है उसको हम बोरिंग करके we are taking out. So that's why there is no, we are not getting the water, and whatever the water rain से आ रहा है वो sea को जा रहा है. So there is a shortage. So that's why we have to implement, or we have to use this rainwater harvesting technique. ठीक है. And rainwater harvesting technique is very natural and cost effective way. ठीक है. So there are two methods are there how you are going to do rainwater harvesting. That is, first one is collection of rainwater and utilize the same. So the two way methods है, जैसे कि बारिश आया वो पानी को आप थोड़ा स्टोर करो, कलेक्ट करो and utilize कर दो. This is the one way of rainwater harvesting. The second one is what you do is you collect the water, that means through some pipe system, rooftop से नीचे लेके आओ, and उसको you leave it to the ground itself, so that ground water table जो है वो improve होता है. ठीक है. So the main aim of the rainwater harvesting is to control the depletion of water level. So that is what I was talking. So जो rainwater का जो भी water level कम हो रहा है उसको कम होने से बचाना है. That means ground water table को improve करना है, and also not only improve करना है, even the quality has to be improved. Even quality भी improve करना है. That to control the flow of sea water within the ground. What happens is if you have to imagine कि कोस्टल एरिया पे अगर वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल कम हो गया ना, तो वट एवर द सी वाटर इज देयर दैट विल एंटर इन टू द नॉर्मल ग्राउंड वाटर पे. देन यू विल नॉट गेट द ड्रिप योर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो, स्वीट वाटर भी नहीं मिलेगा.
So to stop that one, to control that one, you need to maintain the groundwater level, and obviously to save the energy because of all this boring. बहुत वाटर लेवल कम हो रहा है, तो 800-900 मीटर्स तक बोरिंग चल रहा है डेप्थ में. अगर प्रॉपर ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन किया तो यू सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री इवन 150 मीटर 70 मीटर पे पानी मिल रहा है. So even to save the energy also, you need to implement the rainwater harvesting. So why rainwater harvesting? To supply water and satisfy the increased demand. So this is one purpose. We can, whatever the demand is generating, we can satisfy that demand. Then to control the flood in case of excessive rainfall. Even heavy rainfall भी हुआ तो वो surface runoff से flooding नहीं होगा, because you are storing that water. ठीक है. And to improve the quality of the groundwater, to control the erosion of the soil. Surface runoff होता है तो erosion होने का chances रहता है. So you can stop that one also, or you can control that one. ठीक है. So there are few slides are almost same है. Advantages रहने दो, why रहने दो, what is the aim of the rainwater harvesting रहने दो. ठीक है. Advantages of rainwater harvesting is saving of energy, availability of soft water with high quality, that is pure drinking water, less erosion of the soil, cost effective techniques, and controls backflow of seawater. All this information I already discussed in the previous slides. So important to study the geological characteristics of the land to adopt the best possible technique in a particular area. See, rainwater harvesting करते समय even you need to study some geological characteristics also. That means सॉइल कैसा है, या बेडरॉक है, या पानी को आप स्टोर कर कहाँ करना है, या इन्फिल्ट्रेट इजीली होता है क्या. सो मेनी थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर. यू नीड टू स्टडी ऑल दोज थिंग्स. Financial and necessary support is given by national and state government. So even state government and the central government also providing some schemes for this rainwater harvesting. That means even if you are a residential person, residential area है, आप अगर rainwater harvesting आप implement करना चाहते हो तो financially the government is going to support some percentage of that whatever the project cost is there, that will be provided by the government itself. Then different ways there. Rooftop rainwater harvesting, it is one topic. That means whatever the name itself indicates, rooftop rainwater harvesting means जो भी बारिश आता है, जब भी बारिश आता है, आपका जो घर का या जो भी आपका बिल्डिंग का जो रूफ टॉप है, वो उसके ऊपर जो भी पानी गिरेगा उसको आप कलेक्ट करोगे, एंड इट इज़ ट्रांसफर टू द फिल्ट्रेशन के लिए, एंड इट विल बी स्टोर्ड. एंड स्टोरिंग करना है या एनीथिंग, देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो. ठीक है, स्टोर कर सकते हो या डायरेक्टली यू कैन लीव इट टू द ग्राउंड. ठीक है. So following are the assets of the rooftop rainwater harvesting. That means if you are implementing the rainwater harvesting कर रहे हो तो there are some terms are there. There is a catchment area which is nothing but your rooftop. Pipes it is required, even it required filtration, and even finally it required the storage. So catchment area is, I already told, roofs, terrace, footpaths. Pipe for it is required for collection and storage. बिकॉज रूफ से पानी को नीचे लेके आना है तो ऑब्वियसली वी नीड टू ब्रिंग इट थ्रू द पाइप्स विच आर मेड अप ऑफ व्हाट वी कैन से पीवीसी पाइप्स और जीआई पाइप्स आप लेके आ सकते हो. ठीक है. सो गैल्वेनाइज्ड आयरन एंड पीवीसी पाइप्स. फिल्ट्रेशन, दैट इज़ पहले रूफ टॉप से पानी आता है तो ऑब्वियसली वी नीड टू डू सम बेसिक फिल्ट्रेशंस टू रिमूव द सॉइल पार्टिकल, डस्ट रहने दो, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स रहने दो, सो दैट इट कैन सेटल डाउन बिफोर फॉर नेक्स्ट पर्पज यूज होने से पहले. स्टोरेज, आफ्टर फिल्ट्रेशन वाटर इज स्टोर्ड अबो और बिलो ग्राउंड. सो दोनों कर सकते हो. बिलो ग्राउंड लेवल आप स्टोरेज टैंक बना सकते हो, अबो ग्राउंड लेवल भी स्टोरेज टैंक बना सकते हो. एंड दैट पर्टिकुलर स्टोरेज टैंक्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग आरसीसी, ब्रिक्स, फेरोक्रीट, PVC. So it depends upon your finance. So filtration is the most important part. So rooftop water filter nearly 50,000 liters of water per annum can be stored. ठीक है, it's a huge amount of water. If the available roof is area of 1000 square feet and with a rainfall of 600 mm per year. So if some precautionary measure has to be taken. Clean the roof carefully prior to the rainy season. Obviously
रेनी सीज़न आने से पहले एक बार रूफ क्लीन करना है, अदरवाइज ऑब्वियसली पानी गंदा आएगा. Don't allow the water to penetrate just after the first fall. So filter can be cleaned by the closing the wall in front of the T near borewell. So that means basically what you have to do is the first जो rain रहता है उसको ज़्यादा यूटिलाइज मत करो. लेट अलो दैट वन टू पेनेट्रेट नॉर्मल ये वेस्ट कर सकते हो. देन यू कैन filter can be cleaned. That means whatever there are different rooftop है, पाइपिंग सिस्टम है, फिल्टर है एंड देन स्टोरेज है. तो आप स्टोरेज टैंक को बंद कर से फिल्टर का जो भी मटेरियल आपने रखा है या फैसिलिटी प्रोवाइड किया है उसको क्लीन कर सकते हो. ओके. देन रिचार्जिंग टेक्निक्स, देर आर डिफरेंट शैलो स्ट्रक्चर, डीपर स्ट्रक्चर, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स है. when it comes to recharging techniques, say this is not storing one बोले तो आप पानी को रूफटॉप से लेके आओ नीचे, फिल्टर करो और स्टोर करो और यूटिलाइज करो. when it comes to recharging, you are not going to store that one. once it is filtrate होने के बाद उसको आप ग्राउंड पे छोड़ दोगे, रिचार्ज करने के लिए छोड़ दोगे. दैट मीन्स नेचुरली you are allowing the water to enter into the ground so that water level is going to improve. सो उसमें शैलो स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर बोल के दो मेथड है. शैलो स्ट्रक्चर मीन्स पिट मेथड एंड ट्रेंच मेथड है, एंड डीप स्ट्रक्चर मीन्स बोर वेल्स एंड डग वेल्स. दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, एक पिट मेथड में या ट्रेंच मेथड में अलग अलग डायग्राम से यू कैन सी इट इन द नेक्स्ट पीपीटीज में भेजूँगा. सो एक पिट या ट्रेंच करके उसमें पानी को आप अलो करते हो फिल्ट्रेट के बाद, इवन फिल्ट्रेशन भी रख के, तो वो उधर से फिल्टर होके पानी अंदर वाटर लेवल पे जाएगा. ठीक है. देन इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द वाटर लेवल. ठीक है. सो शैलो स्ट्रक्चर, नॉर्मली शैलो स्ट्रक्चर में दैट इज़ वेदर इट इज़ अ पिट और ट्रेंच, ऑब्वियसली सिंस इट इज़ रिचार्जिंग टेक्निक है, इट इज़ गोइंग टू राइज द ग्राउंड वाटर टेबल. एंड जो ट्रेंच है या पिट है उसका डायमेंशंस 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 2 मीटर या 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 3 मीटर या 2 बाई 2 बाई 2 या 2 बाई 2 बाई 3 मीटर क्यूब रख सकते हो. ठीक है. सो सर्कुलर रख सकते हो या रेक्टेंगल रख सकते हो. एंड इट हैज़ टू बी फिल्ड विद एग्रीगेट्स फिल्ट्रेशन के लिए. पिट शुड बी क्लीन पीरियडिकली टू रिमूव द सिल्ट. ऑब्वियसली जो पानी आता रहता है विद सम सिल्ट डस्ट पार्टिकल लेके आता है फिल्ट्रेशन होने के बाद, प्योर वाटर नीचे चला जाता है, बट सम सिल्ट पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स एग्रीगेट्स के बीच में अटका रहता है. सो यू हैव टू कीप ऑन क्लीनिंग पीरियडिकली. ठीक है. ऑन द पिट ग्रिल इज टू बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट. सो ऑब्वियसली पिट जो है, जो भी 1 मीटर बाई 2 मीटर जो भी डायमेंशन का प्रोवाइड कर रहे हो, ऊपर एक पिट एक ग्रिल प्रोवाइड करो सो दैट कोई उसमें ना गिरे, ऐसा फॉर सेफ्टी पर्पस. ठीक है. So same thing, if you take a recharge trench, if the top layer is pervious, then this method is preferred. Sand aggregates, normally basically what so many times you had heard, yes, maybe as a civil engineer you had seen sand and aggregates are used for the filtration purpose. ठीक है. at the top में आप लगा सकते हो, मतलब पहले aggregates fill करो, उसके बाद थोड़ा smaller aggregates, then you can top layer पे sand aggregates भी use कर सकते हो, या लास्ट में सैंड देन डिफरेंट साइजेस ऑफ एग्रीगेट्स डाल के आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो. डायमेंशन trenches at 90 degree to the slope of the ground obviously, and dimension is width 0.9 to 1 meter, depth 1 to 1.5 meter, length 10 to 20 meter, and these area are finalized only after the survey of area and rainfall. So obviously all this trench कितना देना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, ये सब ना एक सर्वे होने के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि एरिया में कौन सा सॉइल है, कितना रेनफॉल आता है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए. एंड दिस मेथड, दैट इज़ रिचार्ज ट्रेंच मेथड, इज सुटेबल फॉर द 200 to 300 स्क्वायर मीटर रूफ एरिया. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ट्रेंच हैज़ टू बी क्लीन्ड एंड ग्रिल एट द टॉप. दिस आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन. देर इज़ अनदर वे कि रिचार्ज वेल का, कि आप पानी कैचमेंट एरिया दैट इज़ रूफ टॉप से पानी कलेक्ट करो, पाइपलाइन से नीचे लेके आओ, फिल्टर करो. देन अगर आपके आजू बाजू में, मतलब आपके घर के आजू बाजू में अगर पुराना वेल है, तो डायरेक्टली यू लीव इट द वाटर टू दैट वन, सो ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर टेबल. ठीक है.
तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड है, ठीक है. सो दैट इज़ अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वेंटिलेशन नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक वो हो गया था, कल ही कर दिया था. सो होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है. सो टुमारो वन मोर वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड. इन दैट पर्टिकुलर वीडियो विल डिस्कस सम मोर बिल्डिंग सर्विसेज का टॉपिक लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है. थैंक यू.